which is LeetCode question number 75, sort colors. So देखो, क्वेश्चन इस LeetCode ने बोला है कि दिस क्वेश्चन इज अ मीडियम प्रॉब्लम. ठीक है, मीडियम लिखा हुआ है यहाँ पे, बट दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द इजीएस्ट प्रॉब्लम्स. ठीक है, क्वेश्चन सेज वी आर गिवन अ array nums with n objects. ठीक है, like this is the question का जो है, let's read it out. Given an array nums n objects of color red, white and blue, we have to sort them in place. मतलब space O of 1 होना चाहिए, और so that the objects of the same color are adjacent with the colors in the order red, white and blue. We will be represent using integers 0, 1 and 2 to represent color red, white and blue respectively. You must solve the problem without using the library sort function. ठीक है, इस समय क्या समझ में आता है? द क्वेश्चन इज, लेट्स सी द एग्जांपल फर्स्ट. एग्जांपल में हमें दिया है नम्स 202110. आउटपुट में हमें इन प्लेस सॉर्टिंग करना है, नो रिटर्न, इट्स अ वॉइड, and it should be 0, 0, 1, 1 and 2, 2. Basically, this looks like a very simple sorting question. हमें zeros को हमें basically ascending order में इसको non descending order में इसको sort करना है. That's the question. So इसके लिए हम we can go about 3 different algorithms, 3 different approaches. Let's see. Let me present the whiteboard first. Is my screen visible? Okay. So सबसे पहले what we can do is sorting, like basically general sorting. हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में एक array 2, 0, 2, 1, 1, 0. So what we can do, we can use the sorting algorithms, कोई भी merge sort, quick sort, and we will be returning 0, 0, 1, 1, 2, 2. That would be time complexity O of n log n and space 1, because in place. This is the first algorithm. Although हमें क्वेश्चन में बोला है कि no, not using, without using the library sort functions, we can still use this algorithm. We like एक बार रन करके देख सकते हैं हम. Let's check कि होता है कि नहीं. Okay. Let's try to code this. Okay. Import java.util.arrays and एक null check डाल देते हैं. And arrays.sort nums. Okay. This should, although question में हमें बोल रखा है कि library sort functions should not be used, this technically हम sorting कर रहे हैं, it should still work. Accepted. Submit, we will not submit. It will be like accepted. Runtime error नहीं होने वाला, TLE नहीं आएगा. Let's try.
Yeah, बहुत गंदा results as we can see 13 and 24. We can optimize it. Like next approach देखते हैं हम. We can look at the next approach. Next approach is, anyone can guess? कोई ideas? इस ये तो basic था. इसके बाद someone can give me any ideas? Comment. हैंड रेस करके बोल सकते हो माइक ऑन करके if anyone wants to. Yeah, Aryan. So can we just count number of zeros, ones, and twos, and then place it in array in the same array? Yeah, very good. That is actually the second approach. We will be we will take three different variables, like int variables. We will count and we will keep the number of zeros, ones, and twos, and we will basically reconstruct the array. How will that be work? Basically, let's see. Yeah, what was our array? हमारा वो क्या था? Yeah, हमारा ये था 2021110. So basically हम क्या करेंगे? We will या वो count बोर्ड स्क्रीन विजिबल नहीं है। screen. Whiteboard visible नहीं है. नहीं, लीड कोड का दिखा रहा Okay, okay, sorry. Is it visible now? है। Okay, okay. Thank you, Laksharaj. Yeah. Yes, this is the array. हमारे पास ये array है. हम basically एक एक variable रखेंगे. Let's say A will count zeros, B will count ones, and C will count twos. So एक for loop हमारा लगेगा for counting. Like normal for loops हम we will be able to कि जब हमें 2 मिल रहा है C प्लस प्लस, 1 0 मिल रहा है A प्लस प्लस, ऐसे करते करते वी विल गो अबाउट दिस. एक फॉर लूप यूज होगा इसमें, एंड देन हम एक और फॉर लूप लगाएंगे एंड वी विल एक नया वेरिएबल लेंगे इंडेक्स. Index is equal to 0, and then we will put zeros first, like number of a number of zeros first, then number of ones, then zero. ये कोड में ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा. लेट मी शो यू. इज माई लीड कोड विजिबल? ओके, इसको हटा देते हैं. या सो एक इंट ले लिया हमें a is equal to 0, int b is equal to 0, int c is equal to 0. For int I is equal to 0, I less than nums dot length I plus plus. If nums I double equal to 0, then a plus plus. Else if nums I double equal to 1, b plus plus, and else c plus plus. ओके, ये हमारा एक फॉर लूप हुआ. देन वी विल यूजिंग अनदर फॉर लूप फॉर int I is equal to 0,
नॉट नम्स ऑफ लेंथ, यहाँ हम यूज करेंगे ए, नंबर ऑफ जीरोस चेक करने के लिए बेसिकली, एंड वी विल हैव अ another variable index is equal to 0. What we will do is nums of index, nums of index is equal to 0, index plus plus. यहाँ हो क्या रहा है, हम इंडेक्स रख रहे हैं क्योंकि हम नेक्स्ट टाइम इंडेक्स से ही स्टार्ट करेंगे, वन रखना. We can even do कि instead of index we can just keep I, and ये वाला part we can just ignore. Same for this. Oh no, that won't work because I need to start from 0 and compare. Nums of index is equal to 1 because A was representing 0, so number of times we will be putting zeros, B number of times we will be putting ones. हेलो Hello. हेलो Yes. भैया मैं बोला था ये जो सेकंड लूप है ये ए से लेके ए प्लस बी तक चलना चाहिए. टेक्निकली वही हो रहा है बिकॉज हम इंडेक्स, पुराना इंडेक्स रख रहे हैं, इंडेक्स विल बी कीपिंग द वैल्यू ऑफ ए, इसलिए इंडेक्स चला रहे हैं हम. आई इज, आई को हम, या वी कैन यूज दैट कि ए से लेके ए प्लस बी तक वी कैन डू दैट, वही होगा, मतलब इट्स द सेम थिंग. कैन ट्राई दैट इन फैक्ट, ए ए प्लस बी एंड देन वी कैन जस्ट डू आई हियर, आई हियर, इंडेक्स का कोई मतलब ही नहीं रहेगा. नाइस. And this will be irrelevant as well. Yeah. Next, for int I is equal to b, I less than, ए प्लस बी होगा. पढ़ो yeah, sorry. ए प्लस बी से एन तक, लाइक लेंथ तक जाएगा पूरा साइज तक. a plus b plus c size ही हो जाएगा, so yeah, but it's same. Num size equal to 2. This is what we are doing कि after counting पूरा, after counting number of frequencies, we are just putting it inside the array, overwriting the previous values. And we are technically हमें दिख रहा है we are using 4 loops, but this is one loop from I to length, and this is another loop from I to n. This is basically the nums of length. Let's see if it's works or not. Yeah, this is a better approach. Still we are like, हमने दो loop use किया. There is another solution where we can do it with one single loop only. It's called the Dutch National Flag algorithm. Basically, इसमें, although the one we did right now, like previous approach also gives O of n and O of 1 a solution, but this Dutch National Flag solution gives like एक for loop में, एक traversal में we can completely do the achieve the solution.
So what that means was, let's see. Yeah. Wait. I'm explaining this. 202110. That was our array. So basically हम यहाँ तीन पॉइंटर्स लेंगे, वन लो, वन mid, and another last one called high. This algorithm says कि हम on basically हमें पता है we will be shifting the zeros to the extreme left and twos to the extreme right, and the ones will by themselves gather in the middle. In each traversal we will be doing swapping. So like uh, let's say हमारा आई पॉइंटर जो फॉर लूप का आई पॉइंटर है, for loop ka I pointer is right now on 2. So when we and low will start from 0, mid will also start from 0, and high will start from n minus 1, where n is the length of the array. I is pointing at 2 right now. The condition will be कि हम check करेंगे if I is I what I is I अगर 2 है, then we will swap middle and high. So that will, after first condition check, our array will become like this: 0 0 2 1 1 2. These two got swapped, and after swapping, middle will go up, high will go minus minus. So this is middle, this is high, and this is still low. Next part, when we see 0, we will be swapping 0, we will be swapping middle and low. That way, जो भी zeros आएगा, that will gather at the extreme left. Although इस swapping के बाद कुछ difference आएगा नहीं, because both are zeros, but middle will get updated. पहले 0 था, then 1 हुआ, then 2, n minus 1, n is 6 here, so it was 5, then 4. Now low got updated to 1, and middle got updated to 2. So the new array will be like this. I guess I have a better way to show this. Wait. So you see, low is 0, middle is 0, high is 5. Same example. After first iteration, 0 and 2 got swapped. Middle and high got swapped. Then both middle and high got minus minus, and middle will also get plus plus. Next, we will check. There was another swap here between low and middle, because because 0 आया यहाँ. Then there was this time high and mid got swapped because हमें 2 दिखा. So the previous was high and middle. So we will be swapping 2 आया, so we will swap high and mid. So this is 1. Next we will check 1 मिला, then that's the end. हमारा condition will be while high is greater than equal to mid. So after mid exceeds high, the loop will end, and we will get our Dutch national flag. This algorithm is called Dutch national flag because these three colors are represented by the Dutch flag. Let's see the coding of this.
ओके, पहले हम 3 पॉइंटर्स ले लेते हैं। लो इज इक्वल टू 0, इंट मिड इज इक्वल टू 0 एंड इंट हाई इज इक्वल टू nums dot length -1. Yeah, ठीक है। And then we're using the for loop. For int I is equal to 0, I less than n, I plus plus. If nums I double equal to 0, we will swap हाँ, यहाँ we will here यहाँ swap is not a function. We will be defining a function called swap. पहले हम इसको लिख लेते हैं, then we will swap. Or maybe we should just define it right away. Private void swap int nums int I and int j. Int temporary variable will store nums of I, nums of I will be swapped to nums of j, and nums of j will be storing temp. No need to return, जो होगा मेमोरी में होगा, nums के वैल्यू स्वैप हो जाएंगे। कमिंग बैक टू दिस, nums of I अगर 1 है, then we won't do anything. हम just mid plus plus कर देंगे। Oh, I forgot, यहाँ हमें वो भी तो करना था। Low plus plus and हेलो। mid plus plus. Yeah, हम आई की जगह यहाँ पर लाइक लो मिड और हाई पॉइंटर भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, for loop क्योंकि में। आई फॉर में नहीं, मतलब वाइल लिख सकते हैं मिड लेस देन इक्वल्स टू हाई, और उसका नम सब मिड करके हम कर सकते हैं डायरेक्टली। नेसेसरी नहीं है, बट हाँ वाइल लूप हम कन्वर्ट कर सकते हैं। शुड आई कन्वर्ट दिस? देखते हैं इसको, देन वी विल चेंज इट इनटू वाइल लूप इसके बाद। Mid plus plus and high plus plus. Sorry, high minus minus. This should allow us to run this properly. Okay, let's try running this. कोई एरर आ रहा है कि नहीं? लोग कैसे प्रॉब्लम्स हो रही हैं? If I just swap it out with a while loop,
एंड मिड प्लस प्लस होना चाहिए यहाँ. फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज फाइन. या तो एल्गोरिथम बेसिकली इसमें इन वन traversal we are getting the results and sorting out the problem, and this is the Dutch flag algorithm.